म्हाका कोंकणी भाशा मंडळाची अध्यक्ष भोवमानेस्त अन्वेषा सिंगबाळ हांच्यांनी भोवमानेस्त गायत्री पटवर्धन आनी डॉक्टर प्राची कामरा हांकां माचयेर हाडचें. Children are the most inquisitive beings, but in their inquisitiveness lies a pure sense of honesty. भुरगीं ही सगळ्यांकीन चड चुळबूळ, पूण तांच्या हे चुळबुळींत प्रामाणीकपण लिपिल्लें आसताच. ह्या सत्राक आमचे मार्गदर्शक म्हूण लाभल्यात आनी ते आयज साधने विशीं बाल साहित्याच्या साधने विशीं उलयतले. ह्या साधना विशीं अदीक म्हायती मेळोवपाक आमी मातशी चुळबूळ जावया आनी उमळशिकेन आयच्या दुसऱ्या सत्रांत वांटो घेवया. आयच्या ह्या दुसऱ्या सत्राक मार्गदर्शक म्हूण लाभल्यात भोवमानेस्त गायत्री पटवर्धन आनी भोवमानेस्त डॉक्टर प्राची कालरा. तांची थोडक्यान वळख. भोवमानेस्त गायत्री पटवर्धन तिचें शिक्षण अभियांत्रिकी विशयांत जाल्लें, पूण ल्हान भुरग्यांच्या वाचप घरांत शिकोवपी म्हूण वावर करप हो तिचो ध्यास तशेंच उपजिविका. तिका जेन्ना आपले धुवे खातीर वाचप घर मेळ्ळें ना तेन्ना तिणें स्वता एक वाचप घर तयार केलें. तिका भुरग्यांचेर आसपी पुस्तकांच्या आनी काणयांच्या प्रभावाची पुराय जाणविकाय आनी विश्वास आसा. वाचन हो विचार सगळ्यां मेरेन पावप हो तिच्या कहानी किड्स लायब्ररीचो उद्देश आसा. आयच्या संवसारांत वाचपी भुरग्यां खातीर एक खास सुवात सुगूर करपाचे नदरेंतल्यान ती वावुरता. सगळ्यांनी मोठ्यान ताळयो वाजोवन तांकां येवपाचें. तशीच आमची दुसरी मार्गदर्शिका डॉक्टर प्राची कालरा. हांचो जल्म नागपुरांत जाल्लो. तिची आवयन आनी आजयेन तिका काणयो सांगून आनी वाचून दाखोवन तिच्यान काणयांचो मोग रुजयलो. सध्या डॉक्टर प्राची दिल्ली विद्यापीठांत भास आनी बाल साहित्याचो अभ्यासक्रम शिकयतात. दिल्ली विद्यापीठांतल्यान डॉक्टर प्राचीन काणयो कथन ह्या विशयांत PhD केल्या. तिच्या प्रबंधांतल्या म्हायती प्रमाण भुरग्यांक तशेंच तरणाट्यांक घुसपा गोंदळाच्यो काणयो आवडटात. तातूंत बोध आसूंकूच जाय अशें ना. काणयो भुरग्यांक आपल्या जिविताचो अर्थ समजून घेवपाक आदार करतात. त्यो फक्त याद तपासपाक वा व्याकरण शिकोवपाक वापरूंक जायना. डॉक्टर प्राची दिल्लींत रावता आनी तिचे कडेन भुरग्यांच्या पुस्तकांचो व्हडलो संग्रह आसा. पुस्तकांच्या प्रदर्शनांतल्यान आनी वापरिल्ल्या पुस्तकांच्या सेकंड हँड बुकशॉप दुकानांतल्यान पुस्तकां वेचून काडून तिणें हो संग्रह तयार केला. भुरग्यां खातीर भौशीक वाचनालय उगडपाचें तांचें सपन आसा. तांकांय मोठ्यान ताळयो फावो. मागता गोंयची बाल साहित्यीक भोवमानेस्त हर्षा शेटये हांचे लागीं तांच्यांनी आमच्या मार्गदर्शकांक भोवमानेस्त गायत्री पटवर्धन आनी डॉक्टर प्राची कालरा हांकां मोगाची भेट दिवची. Dear welcome, Miss. Requesting Miss Gayatri Patwardhan to kindly come forward and share your views regarding the topic today. Good afternoon, everyone. First of all, I would like to thank Konkani Bhasha Mandal for organizing this 5th Bala Sahitya Parishad. मी इथे परवा आले आणि परवापासून जे काही मी बघतीये कोकणी भाषा मंडळ त्यांचे सगळे कार्यकर्ते अन्वेषा ही सगळं म्हणजे फॅमिली आहे ही ती बघून इट इज क्वाइट ओव्हरवेल्मिंग टू सी दिस काइंड ऑफ लव दॅट वी हॅव रिसीव्ड. सो थँक यू अन्वेषा अँड ऑल द व्हॉलंटियर्स ऑफ कोकणी भाषा मंडळ.
I really appreciate the selfless work that you all have been putting into consistently through years and are marching towards the same cause. Very inspiring for us. My topic for the day is resources of children's literature, utilities and engagement. Since most of you are teachers, we all are aware of, several resources of children's literature that we have. We've heard speakers talk yesterday about it as well. So I won't talk in detail about it, but later we'll talk about the utilities and most importantly about the engagement, where I'll speak about my learnings as a librarian. So before I begin, I'll just introduce you to my work. I run this library called Kahani Kids Library. It's in Pune, and we are into our second year this year. So when my daughter was born, and I wanted to introduce her to different kinds of books, I couldn't find a single library in my city. So I started collecting interesting books from all across the world, and before I knew it, I had a collection of about 1,000 books in my home. So as the lockdown began, schools were closed, my daughter's friends started borrowing books from me. Then their friends wanted books. And then I understood that this is kind of a void that there is. And there are people, parents like me, who are in need of good books for their children. So that is how the library started. Before I started this library, I had a few criteria that I wanted to stick to. First of all, I wanted to make a children's library. It has to be child-centric in every aspect. And the book collection had to be hyper-curated, so quality over quantity. And I wanted to promote reading for pleasure. So I'll just take you through a small video of our library so that you can have some visual idea of what I'm talking about in my talk. Next slide. So this was Ovi, our library member, and we made this video because this is the constant struggle that I face, because when I tell that I run a kids library, sometimes it is, can you hear me? Yes. Oh, the mic works. All right. So parents are not able to understand what a child's library could be. So what could it be, right? It could have just a few books with moral stories and a grumpy librarian who is always doing shoo to children. So that is precisely not what we want to do for our children. We want them to come to the library because they want to. And if you see 3 hashtags that were on the other side of the video, we promote reading for pleasure, not because they have to read or not because they're going to get good grades, their language is going to improve, and not because of all that, but because they want to read, because they feel like reading, they get joy out of reading. So reading for pleasure. And other thing is, we are not just a library, and no library should just be a library. It could be so much more.
Sure? Yeah. This is the time that something goes wrong. So yes. All right. So as you can see, raising readers is number one. We want to raise readers. Reading for pleasure, also number one, and not just a library is also number one. Next. So now let's quickly go through the resources that we have for children's literature. Of course, the oldest and the most popular, that is something that has stood the test of time, is storytelling, oral narration. That is how Samniti, Panchatantra, folk tales came to us generation to generation by the act of storytelling. It's still the most popular resource of children's literature that there is. Other, of course, books, libraries. In today's world, the list is literally endless, as Asawari has also, spoke about last afternoon. Audiobooks, audiovisual, and plenty more things. So today I'll be focusing about 3 things that we use in the library, and almost all of you must be using in your classrooms: storytelling, books, and libraries. Next. So why do we need books? What can books do to us, our children? What can they provide? First of all, and as teachers, it must be your favorite utility of the children's literature, promotes literacy skills, of course. Reading fluency, comprehension, vocabulary development, language improvement. Number 1. Next. One slide earlier. Yeah. Children's literature can foster imagination and creativity. So children's literature often features fictional stories. They take us into fantasy worlds where we have to imagine things according to our own, thought process and previous experiences. By immersing themselves in imaginative narratives, children learn to think creatively, explore new ideas, and envision possibilities beyond their immediate reality. So this is a very favorite quote. Reading gives us some place to go when we have to stay where we are. So that is indeed very true. It encourages empathy and understanding of our immediate world. So all these books are from the library. So much can happen through books. So many dialogues could be opened up through books. Okay. So many children's books these days explore different themes, as we've already seen. Themes of empathy, kindness, diversity, inclusion, mental health, so on and so forth. So we have so many tools with us today to use with our children to open up difficult dialogues that otherwise would have been very difficult or awkward. Provides emotional support, can be used as tools to open up important dialogues. So this is these are a few books that are very popular in the library. I would especially like to talk about this book, Have You Filled a Bucket Today? So this story has an imaginary bucket, and the boy in the story is always bullied in the school. So his grandfather comes with this idea of an imaginary bucket. So whenever we do something good, our bucket gets filled, and the other's bucket also gets filled. Whenever we do something mean, our bucket gets drained, and others' bucket also gets drained. So this girl who was facing a few challenges in the school, her parents took this book and they read aloud to her during her bedtime, I think. And it helped her in such a beautiful way. And this Have You Filled Your Bucket
is now like their family term that they use almost daily to share the happenings that may have happened in the school, or whatever it is. So it could be a family. What do you say? Books could be used as a way to open up dialogues in families, or it could be a family thing also. Encourages critical thinking, understanding the world around us. I'll just quickly move on through these. Strengthen parent-child as well as teacher-children bond. Yeah, this is obvious one. Yes, the most important of it all. Cultivates love for reading. So reading for pleasure that we spoke about. So how do we cultivate and nourish this love for reading? How do we foster positive engagement? So having the freedom to read and the freedom to choose is one of the best gifts my parents ever gave me. This is a quote by Judy Blume, who is again a favorite writer in our library. And that brings us to this question: why do we need children's libraries? What is a children's library? Is it just a collection of books and a few librarians, or is it more than that? Always believed that the library could be so many things other than just a collection of books. It could be a magnet for kids to get attracted to. Many libraries tend to repel kids, and kids have this library period which they have to do tick marks. Okay, library period done. This book, okay, read. These answers, okay, answered. So that is not the library. That is not children's library. Children's library is a place for kids to be themselves, to have the freedom to pick whatever books they want to read. So it is primarily their space, and we are just the enablers or connecting books to the children. Libraries are, I think, integral parts of the society, and it has been like that since ancient times. If you ever think about it, whenever there would have been conflicts or wars, the two things to get burnt or demolished were the places of worship and then the libraries. So it is very thought-provoking to think why that must have been the case. Yesterday also we were speaking that even the Goan Kokani literature was burnt when there was conflict, because books and the literature is so powerful. So that is the thing that they wanted to take away from us. So this is the book, Hands Around the Library, Protecting Egypt's Treasured Books. So when there was this conflict, war happening in Egypt, and they wanted to burn the central library of Egypt, all the citizens gathered, they put their hands, they held each other's hands, and they made a huge circle around the Egyptian library, and that is how they saved their library. So that is the power of the libraries, and that is why we need to protect our libraries too. In today's age, we don't have wars every day. So, but I still think we are fighting against quite a few enemies every day, be it screens or be it distractions, social media, and all these challenges that our kids face. So we need to protect our libraries from all those enemies. Now let's take a minute and imagine your school library. Do you look forward to spending time in it? Do you, as teachers, I'm asking, do you leisurely just browse through books just because you want to?
Do children enjoy their library visits? Do they use library space outside of the library period? Maybe quick visits during lunchtime or quick visits after school. Do they have the freedom to choose, browse, pick their own books for themselves to take home? So if the answers to these questions were positive, I would love to congratulate you. But if the questions to these answers to these questions were somewhat negative, we have work to do, and it doesn't take much, honestly. You already are teachers, so you are well equipped with what a child may need, or you are experienced. I'm an architect, and I didn't know anything about children's literature or children's psychology or anything like that. But I think when we say we are teachers, we are parents also, and that is enough. Like being a parent or having that mindset of giving our children something that they really deserve. Not deserve, I mean they of course deserve books. Everyone deserves books. So we really need to reinvent or reimagine our school libraries in general. And this is the picture illustration from a book called Miss Moore Thought Otherwise. So Miss Moore is was a librarian in the US when the libraries used to be, just collection of books and very adult-centric library spaces. So she was the first one to think otherwise. The first thing that she did for the children's literature area, she took down the silence board. We don't need silence board or librarians doing shh all the time in the libraries. It's time to let go of our out-of-context old ideas and time to take children's libraries, time to make children's libraries more child-centric in every aspect. Again, this is the illustration from the same book. Here you can see that she has opened the big windows, she is letting the sunlight come in the room, she has painted the walls in bright color, she has arranged the shelves in such a way that there is a space to roam around for kids, space to lie around and read. Now let's see the components of the library. What makes a library a children's library? So we've divided them in three categories. First one is the obvious one, books, space to be, and ambience. We'll go into detail of each later. The second one is the staff, human resource, librarians, educators, teachers, of course children and parents. And the third one is activities, interaction, and freedom or non-judgmental zone. And all of this together can make a vibrant children's library. So books, age-appropriate books, of course, across all genres, quality over quantity always. So these are some of the videos from the library for you to see. Our furniture is also designed in such a way that any child can reach to a book very easily. They can be in the library by themselves and browse, taking their own time. Child-centric furniture and shelving. So these are all very easy to implement things that one can do in the library to make it more child-centric. And even these small things add up very quickly. Most importantly, a space to be. A space where no one will tell a child, okay, need bus, sit properly, he vachu noko, te vach, he changal hai, he karu noko. No instructions. Ambience, so natural light, spaces for kids to, little nooks and corners for kids to, just go under and read, or maybe just lie on the terrace and read, do whatever they want, but just read. So
So this is what I've observed through these 2 years that I've been in this field. This bond, 3 bonds between librarians and children, children and parents and librarians. This triangle, this chemistry is really very critical and important. So children and librarians, 1:1 bond. They trust the librarians a lot because we are not teachers. We are somewhere in between. We are not like they are not answerable to us for anything, and we are not parents as well. But the kind of nourishment or the kind of care that we have for our kids, it just makes them I don't know, they make us very trustworthy for kids. I don't know. Yeah. So that generation of that bond is extremely important, and that can happen between a teacher and a child as well. Then children and parent, you can encourage parents to read with their kids at bedtime as teachers if you want to, really have this reading culture in your school. And of course, librarians and parents, or teachers and parents for that matter. Because regular feedback or for the child's holistic development, that all plays a very critical role. So if we imagine this library as a magnet, it can really give our kids a different place to be in between home and school, where they can be themselves, explore what they like, what they don't like, discuss about it with someone, and do it on a regular basis so that it becomes a habit. Because if we tell kids that, okay, you have to be a good reader, read books, no child is going to read books. But if we sit in front of them, we just casually read for pleasure ourselves, then they're going to see it and they're going to pick it from us. So as a teacher or as a librarian, what can we do to enable that to happen? So I'm just going to give a few tips that I have found useful and that you could take back to your classrooms and schools that are very easy to do. Some of which are read aloud with your children regularly with enthusiasm and follow it with either a small activity or a small discussion. Even if you do that on a regular, consistent basis, it could be once a month, once a week, whatever your time schedule allows you to, it will have a phenomenal effect on the development of the child's reading journey. Interact on one-on-one basis. As teachers, it might not be possible every time, but yeah, you can maybe make smaller groups and try to do that. You can recommend books to kids if you think that some child is facing some issue or something is, you can, as teachers we know, right, when something is not right, so you can recommend books accordingly. Always ask children for their feedback and keep a note of it. It's very important that we collect feedback from kids because it will help us curate our library collection as well, and it will help us to recommend as well. Let them read whatever they want to. It could be, to begin with, it could be Geronimo, it could be Peppa, it could be whatever it is. But then slowly, as the trust, your bond with the child gets more mature, you could also gently nudge them towards different authors, different genres, different topics, and that is how their reading journey will be more complete. This is what we do in the library. We celebrate all the festivals, all the important days in library with the help of course, stories, books, along with activities. So what we generally do is we have this monthly library calendar, which you can do in your school. And it has all the events like storytelling sessions, craft work, this and that, which not necessarily always involve reading as per, say.
because not each child likes to read to begin with. So you can try to mix and match different things and try to invite kids. So some are into activities, so those kids will be invited, will feel like coming to the library. Some like to sing, so those will feel coming to the library. So just try to host as many things as you can around stories, and not specifically books, but around stories, so that library can become this magnet that attracts all kinds of kids. And once the kids start to come in the library as a habit, then many things can happen later. So if I have to give you the gist of what I wanted to say, it would be this: that reading should not be presented to kids as a chore or as a duty, but it should be offered as a gift. So I wish we are all able to give that space to our kids, especially in today's world where our kids have so many challenges, so many distractions that they did not ask for. They did not ask for smartphones, or when they were born, it was just there. And I really feel bad for them in a way, that they are born in this distracted world where even we as parents, we as teachers are also distracted. But I think libraries hold so much potential, they hold so much hope, that we can definitely make good use of this idea that the library is. Just to end my talk, I thought of giving a few ideas to you as teachers that you can start implementing from tomorrow if you want to, and that does not cost any money, or taking permission from principal and all that. So just one thing that I really find interesting is you can have your own classroom library. If changing the main school libraries is not in your hands, you can start your small classroom library. So if, for example, if we say grade 1 and grade 2, and you have 3 classes of each, so you have 6 classes, and say 30 students in each class, you can start by asking, just bring one book, and then you have a box of 30 books per class. Then you can rotate that box every month. So all those 6 classes get boxes of new books every month, and they'll have access to many more books. And you can just keep that box or the bin in a corner. You can maybe decorate that corner as your classroom library. You can ask kids to name your corner, decorate it, make that space their own. And you can maybe shell out some time out of your maths and English and all of those important classes. You can maybe shell maybe 15 minutes every day, 10 minutes every day out of your schedule, and just ask kids to be themselves and just take a book and read. Then, of course, as I said, you can do read aloud sessions regularly. Kids can read aloud to each other. It does not have to always involve the teacher. Kids can manage many things in between themselves. What else? Right. Another thing is, if you decide to do that classroom thing, you can ask kids to make their own library cards that they can maintain. They can document their reading journey, and they can have a nano library that they are in charge of in their classroom library. And the most importantly, you got to read yourself. You got to carry a book, as Vanitha very rightly said. Kids need to see us reading for pleasure, not because we need to stay updated. So I'm reading newspaper. That is reading, but reading for pleasure is just reading for pleasure. So please do it yourself. While kids are getting their 10 minutes, 15 minutes, whatever it is, library time, you also can sit with your own book and just read. Thank you.
Thank you, ma'am. It was a pleasure listening to you and your experiences. Now requesting Dr. Prachi Kalra to please step forward and provide us with guidance regarding the topic for today. लाइट्स आती है ना, और ये पोडियम भी मुझे थोड़ा हमेशा डरावना लगता है। तो एनीवे, तो थैंक्स, मेनी थैंक्स टू गायत्री। बहुत सारी बातें जो मैं कहना चाहती थी वो गायत्री तो पहले ही कह दी है, तो मैं हर बात पे फिर ये कह दूंगी, रेफर टू गायत्री। तो मेरी भी बातचीत एक्चुअली आज लाइब्रेरीज के ऊपर है, और ये थोड़ा सा रीइमेजिन करने की कोशिश करना कि लाइब्रेरी या क्लासरूम लाइब्रेरी किस तरह की हो, और वो किस तरह की स्पेस हो, जिसमें बहुत कुछ गायत्री ने कह दिया। तो आई जस्ट बिगिन विद माय ओन लाइब्रेरी एक्सपीरियंस। तो हमारा जो स्कूल था, जब मैं प्राइमरी में थी, काफ़ी साल पहले की बात है, तो जो हमारा स्कूल था उसमें जो प्राइमरी की लाइब्रेरी थी वो बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी लाइब्रेरी गायत्री ने दिखाई, जिसमें कि शेल्व्स वो छोटे होते हैं, सुंदर कलर्स हैं, सुंदर एम्बियंस है। तो वो लोहे वाले वो हुआ करते थे शेल्व्स, और वो ऊंचे ऊंचे, और मुझे याद है मैं यूं करके देखती थी उसको कि यहाँ से ये किताब कैसे तुम्हारे तक आएगी। मगर हमारी जो टीचर थी उन्होंने क्या किया था, और ये मुझे लगता है कि काफ़ी सारी, जैसे मैं अपने स्टूडेंट से भी बात करती हूँ, उनका ये एक्सपीरियंस रहता है खासतौर पे प्राइमरी लेवल पे, कि टीचर्स कुछ 25-30 किताबें अपने आप सेलेक्ट कर लेती हैं और वो वही हैंड ओवर कर देती हैं। तो हमारी टीचर यही करती थी कि वो कुछ 25-30 किताबें पहले से निकाल के वो हैंड ओवर कर देती, और वो पूरे साल वही 25-30 किताबें सर्कुलेट होती रहती थी। तो आपने रिटर्न की तो वो किसी और बच्चे ने रिटर्न की तो आप वो इशू कर सकते हो। उसमें एक गड़बड़ क्या हो जाती थी कि अगर कोई बच्चा उस दिन अपनी किताब लाना भूल गया, then the situation used to get stuck। तो कोई ना कोई बच्चा ऐसा होता था जिसको नहीं मिलती थी, क्योंकि कोई एक बच्चा अपनी किताब लाना भूल गया। Then when I reached class 6, तो then we had a more interesting library space, and now in school we had the freedom to select। ओके, तो वो सिलेक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। तो मैंने वो सारी पॉपुलर सीरीज पढ़ी, हार्डी बॉयज से लेकर वो दूसरी वाली कौन सी थी, नैन्सी ड्रू। ओके, और वो नैन्सी ड्रू का एक बॉयफ्रेंड था। ओके, तो हमारा तो कोई बॉयफ्रेंड होता नहीं था, तो वी यूज्ड टू लिव आवर रोमांटिक लाइफ थ्रू नैन्सी ड्रू। ओके, एंड देयर वाज नेवर अ किस in Nancy Drew, but she would always be out with her boyfriend and we used to wait कि एक ना एक किताब में एक किस तो होगा। वो बात ये रही कि वो हमेशा डिसअपॉइंटिंग ही रहा, but the Nancy Drews and Hardy Boys played a role in our lives in reading popular books, and then we grew up and we read a lot more। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात क्या थी हमारी लाइब्रेरी में कि वो एक कांच की अलमारी थी जिसमें रेफरेंस बुक्स हुआ करती थी, एनसाइक्लोपीडियाज वगैरह। तो आपको लाइब्रेरियन से चाबी मांग के उसको खोल के फिर वो एनसाइक्लोपीडिया निकाल के कंसल्ट करना होता था। और एक सेक्शन था जहाँ पे हमारे लाइब्रेरियन ने बोल दिया था इसको मत हाथ लगाना, क्योंकि ये सिर्फ टीचर्स के लिए किताबें हैं और ये बच्चों के लिए नहीं है। अब हमारी सारी नज़र उसी सेक्शन पे रहती थी कि ये क्या किताबें हैं जो टीचर्स के लिए हैं और हमारे लिए नहीं है। तो और हमारे लाइब्रेरियन थोड़ी वो स्ट्रिक्ट टाइप थी, चश्मा पहन के वो खुद अखबार लेके बैठे रहते थे, मगर हम अगर चाबी मांगने जाएं तो फट से वो चाबी दे देते थे, अच्छा तुम्हें कोई किताब चाहिए निकालो। तो एक दिन मैंने सोचा कि जरा इन किताबों को भी देखा जाए, ये कौन सी किताब है जो टीचर्स पढ़ रही हैं और हमारे लिए नहीं है। तो मैं उसमें से एक किताब निकाली, इट वॉज अ नॉवल, ऑल राइट, एंड नाउ आई डोंट इवन रिमेंबर व्हाट द नॉवल वाज, ओके, बट द sheer thrill of taking out a forbidden book
जो कि फॉरबिडन थी इसलिए कि वो उस पर एडल्ट कंटेंट है। ओके, तो मैं ले गई लाइब्रेरी ने उसको देखा, कहते हैं ये कहाँ से मिली। मैंने जरूर वहाँ पीछे रखी हुई थी। तो कहते पीछे रखी हुई थी, ये तुमने वहाँ से नहीं निकाली जहाँ पे वो रेफरेंस बुक्स हैं। मैंने कहा सर पता नहीं, मुझे तो बाहर से मिली। तो देन he somehow bought that story, okay, and I was able to issue that book. Oh, that thrill of just issuing a book जो कि forbidden थी, and I took that home. Now honestly I don't even remember कि वो ऐसी क्या खास किताब थी कि वो forbidden थी. So the whole point of what do we not allow children to read in our libraries. Then a third point that I wanted to make was also what Gayatri said and Vanita said earlier, which is that at home I grew up with a mother who was a reader. तो वो हिंदी में पढ़ती थी और हम बहुत कुछ हिंदी में भी पढ़ते हुए बड़े हुए और इंग्लिश में स्कूल ने इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश की किताबों के साथ. तो my mother would read aloud to us even from magazines such as धर्मयोग and so on जो उनके पास आती थी या उनकी भी जो किताबें होती थी. तो I was a reader before I learned to read. So that was an interesting part of my journey. And another aspect to this was कि मेरी मम्मी को खाने वाने का बनाने का ज़्यादा शौक नहीं था. तो वो मतलब उनको ये रहता था कि ये कुछ रोटी वोटी खिला दो एंड दैट शुड मेक यू हैप्पी. मगर उनका एक स्ट्रिक्ट रीडिंग टाइम था और वो मुझे और मेरी बहन को ये पता था कि इनसे इस टाइम पर पंगा नहीं लेना है, क्योंकि अगर इनको इस टाइम पे डिस्टर्ब किया तो पड़ेगा. ओके, तो वी हैड नो अदर ऑप्शन except to entertain ourselves, my sister and I, with the books that we had. Okay, तो वो उनको उलटना पलटना अगर हमें नहीं भी अभी पढ़ना आता था तो भी हमारे पास जो किताबें थी. And another very strong memory that I have is, when I was around 2.5 years old, तो हमें बुक शॉप में गए और my mother at that time was heavily pregnant. She was expecting my daughter. और वो बैठ गई एक स्टूल लेके और उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा देखो तुम किताबें यहाँ से कौन सी तुम्हें पसंद है लेकर आ जाओ. तो मैं एक किताब लेकर आई एंड आई स्टिल हैव दैट मेमोरी ऑफ हर सिटिंग विद वेरी प्रेग्नेंट एंड आई एम ब्रिंगिंग बुक्स. वो एक दो बार उन्होंने बोला नहीं ये बहुत महंगी है, कुछ और ढूंढ कर लाओ. ओके, तो आई वेंट अराउंड द बुक शॉप, मैंने कुछ किताबें ढूंढी. सो आई हैव दैट मेमोरी. और ये टाइम जो उनका रीडिंग का टाइम था, वहाँ से हमें ये बात मैंने और मेरी बहन ने सीखी कि ये कुछ ऐसा काम है जो मेरी मम्मी के लिए इम्पोर्टेंट है. शी मस्ट बी गेटिंग सम प्लेजर फ्रॉम हर बुक्स, तभी ऐसे बैठ के पढ़ रही हैं. तो ये बात जो फैमिली में और टीच. एंड देन another strong memory I have is in class 8. तो हमारी टीचर थी मिसेस जॉनसन. ना मिसेस जॉनसन was also a big reader. ओके, तो उनके हाथ में एक किताब होती थी, वो हमारी क्लास में आती थी. तो हमारे बड़े झांके देखते थे कि ये आज कौन सी किताब लेकर आई है. तो कभी कभी उनसे पूछते थे कि कौन सी किताब लेकर आया. तो शी वुड होल्ड इट अप एंड से देखो ये वाली ये किताब है, मैंने लाइब्रेरी से इशू की है. और उनको भूत की कहानियों का बहुत शौक था. शी वाज वेरी फॉन्ड ऑफ थ्रिलर्स. ओके, गोस्ट स्टोरीज, थ्रिलर्स, मर्डर्स. ओके, वो जितने खून हो किताब वो मुझे लगता है मिसेस जॉनसन को उतनी ज़्यादा पसंद आती थी. तो देन शी वुड रीड आउट टू अस. ओके, एंड जस्ट अ फ्यू पेजेस. ओके, और हमें वो किताब चाहिए होती थी और वो कुछ ऐसा पोर्शन पढ़ देती थी जहाँ पर कुछ खून वून हुआ. आई रिमेंबर वन गोस्ट स्टोरी. इमेजिन दिस वाज क्लास 8. I remember one portion of a ghost story that she narrated, जिसमें पता नहीं क्या कुछ गरम हो गया और वो ऐसे पिघल गया. And I don't know what, I don't remember it very well, but I do remember wanting to read it. तो फिर वो हमेशा बताती थी कि ये किताब अगर वो उनकी अपनी होती थी तो बताती थी कहाँ से लेती है, लाइब्रेरी की होती थी तो she would tell us.
So that is where I thought I would begin. So that's my presentation. Just a quick summary in the next slide on how we look at libraries and what kinds. So I'm looking at library from two perspectives: library as a space and library as a concept. तो library as a space, तो ये मतलब एक हमारा पीरियड हुआ करता था लाइब्रेरी का, जिसमें अगर तो किसी भी टीचर का करिकुलम पीछे चल रहा है तो सबसे पहले लाइब्रेरी पीरियड सैक्रिफाइस हो जाता था। तो हमारी केमिस्ट्री की टीचर, गर्ल्स नो लाइब्रेरी पीरियड टुडे आई एम टेकिंग केमिस्ट्री, एंड वी यूज्ड टू से ऑलराइट भाई ऑलराइट। सो ये हमने कुछ अपने टीचर्स के साथ फिर पैक्ट बना लिया था कि चाहे कुछ भी हो, ये लाइब्रेरी का पीरियड नहीं जाना चाहिए, यू कैन नॉट टेक ओवर द लाइब्रेरी पीरियड। Okay, so the other period which used to be sacrificed was the sports period. तो किन्हीं को वो sacrifice होने की समस्या थी, और मेरे जैसे जो कि बास्केटबॉल वगैरह में इंटरेस्टेड नहीं थे, उनको लाइब्रेरी पीरियड sacrifice होने पे समस्या होती थी। फिर as Gayatri also mentioned, this whole idea about pin drop silence. आप किसी भी बॉलीवुड मूवी को देख लो जिसमें लाइब्रेरी दिखाई जाती है, तो वो एक तो रोमांस वहां पर शुरू होता है, मगर उससे ज्यादा ये होता है कि ओके, सो इट इज ऑलवेज अबाउट शशिंग पीपल अप। ओके, सो इट वाज फैंटास्टिक टू सी गायत्रीज लाइब्रेरी, जहाँ बच्चे आ रहे हैं, पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं, देयर इज सो मच टॉक अराउंड बुक्स, एंड अल्टीमेटली हम ये मानते हैं कि रीडिंग इज एक्चुअली एन इंडिविजुअल एक्टिविटी। जो आप एक किताब निकाल के कोई भी इंडिविजुअल, बट एक्चुअली वी डोंट रियलाइज दैट रीडिंग इज सो मच अ सोशल एक्टिविटी वेयर वी वांट टू टॉक अबाउट द बुक्स दैट वी लव्ड। मतलब मूवीज भी तो हम रेकमेंड करते रहते हैं दूसरे को, कोई हमें पसंद आती, तूने ये पिक्चर देखी, तो यही बात तो बुक्स के साथ भी है। जो हमारी फेवरेट किताबें होती हैं, जो हमें जिस किताब ने इम्प्रेस किया, तो वो हम चाहते हैं कि हमारी फ्रेंड भी पढ़े, हमारी टीचर पढ़े। ओके, तो व्हेन आई वाज अ टीचर इन स्कूल, आई रिमेंबर दैट द लाइब्रेरी यूज्ड टू बी अ स्पेस वेयर आई कुड टॉक टू माय स्टूडेंट्स अबाउट व्हाट दे आर रीडिंग, एंड I remember I had this student and he has still stayed in touch with me after so many years. His name was Deepak, and he used to recommend books to me. कहता है, मैम ये वाली किताब आपने मुझे बताई थी, ठीक है, ये मैंने पढ़ ली, अच्छी लगी मुझे, आपने ये वाली पढ़ी? ओके, तो मुझे ये लगता था मैंने नहीं पढ़ी। ऑलराइट, देन ही यूज्ड टू बी वेरी थ्रिल्ड कि उसने वो किताब रेकमेंड की और मैंने पढ़ी, और फिर मैंने उसको बताया कि सच में मैंने ये किताब पढ़ी और मुझे बहुत मजेदार लगी। Okay, now Deepak is working somewhere in Egypt, he's worked in Europe, and sometimes he still sends me an email to say, ma'am, I read this book, have you read it? All right, so that is the connection that we have maintained. और एक और चीज जो आप अगली स्लाइड पर जाएं, तो ये मैंने एक मतलब फोटो खींची, तो so many libraries have shelves which are filled with what Neha was also talking earlier, आदर्श कहानियाँ, संपूर्ण बाल साहित्य, शिक्षाप्रद बोध कथाएं. So the notion about a library collection, and our notion is also that books should teach good moral values to children, and we sometimes forget that all powerful stories, books say something, but it is not a moral lesson which has to be hammered down your throat, which is anyway meaningless. तो ये जो ज़रूरत है एक लाइब्रेरी कलेक्शन को भी थोड़ा शेकअप करने की, कि हम अपनी लाइब्रेरी में क्या इंक्लूड कर रहे हैं, कैसे क्यूरेट कर रहे हैं. एक बार आप वापस जाएंगे पिछली वाली स्लाइड पे. And I have also realized the schools that I have visited and been to कि हम ये मान लेते हैं कि 8वीं के बाद तो बच्चों को केवल रेफरेंस बुक्स, गाइड बुक्स,
अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मैंने कितने स्कूल्स की लाइब्रेरीज देखी हैं जहाँ पे वही आयरन शेल्व्स होते हैं जिसको टूम करके खोला जाता है, और सभी में वो मैथ्स की गाइड बुक्स, रेफरेंस बुक्स, और हम ये कहते हैं बच्चों से कि आप अब 8वीं में आ गए हो भैया, अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो और पढ़ाई पर ध्यान दो और केवल यही किताबें पढ़ो। मगर जैसे गायत्री भी कह रही थी, नेहा ने भी पहले बात की, दैट द होल आइडिया ऑफ हाउ बुक्स मेक यू लुक एट द वर्ल्ड अराउंड यू फ्रॉम सो मेनी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, एंड दे चैलेंज हु यू आर, हाउ यू थिंक ऑफ योरसेल्फ, वो बहुत सी चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो थोड़ी सी बात करूंगी कि लाइब्रेरी एज अ स्पेस, हाउ कैन वी चेंज दैट। तो एक तो ये कि वो साइलेंस वाला बोर्ड अगर हम हटा दें, तो लाइब्रेरी एज अ स्पेस फॉर टीचर्स, स्टूडेंट्स अमंग्स देमसेल्व्स आल्सो टू इंटरैक्ट, टू टॉक अबाउट व्हाट दे आर रीडिंग। और मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में पढ़ा रही थी तो लाइब्रेरी पीरियड में बहुत बार यही होता था कि जो मैगजीन्स होती थी वो चंपक, नंदन जैसी वही बस डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी, बच्चे वही पढ़ते थे, और बुक्स इशू करने की तो परंपरा ही बहुत कम होती थी, स्पेशली ये कि भाई आप नॉवेल्स पर तो अपना टाइम मत ही वेस्ट करिए। सो या ऑलराइट, तो ये गायत्री भी बात कर चुकी हैं, लाइब्रेरी एज अ स्पेस फॉर स्टोरी टेलिंग एंड फॉर रीडिंग अलाउड। तो स्टोरी टेलिंग, जैसे ये फोटो मैंने एक स्टोरी टेलिंग इवेंट से ही खींची है, and you can see the juxtaposition between the storyteller and the mother and the child who are listening with so much attention. तो actually American library movement वो पिछली सेंचुरी में जब वो रिवाइव हुई तो उन्होंने सोचा कि बच्चों को कैसे लाइब्रेरीज की तरफ अट्रैक्ट किया जाए। तो इट वाज ओरल स्टोरी टेलिंग which revived the art of oral storytelling plus brought children to लाइब्रेरीज। तो अमेरिकन वो मूवमेंट लाइब्रेरीज की, वो उन्होंने ओरल स्टोरी टेलिंग पे बहुत फोकस किया। तो लाइब्रेरी स्पेस में भी स्टोरीज और स्टोरी टेलिंग की संभावना, और स्कूल की लाइब्रेरी में क्यों ना हो। स्कूल की लाइब्रेरीज तो दे लार्जली रिमेन स्पेसेस जहाँ पर आप बुक रिटर्न करो, बुक इशू करो, और अगर आप 2 महीने लेट हो गए हो तो आप उसका फाइन पे करो। तो लार्जली यही रहता है स्कूल की लाइब्रेरीज के साथ। हाँ, फिर ये और है एक और फोटोग्राफ, तो द एंगेजमेंट बिटवीन द स्टोरी टेलर एंड शी वाज टेलिंग एक्चुअली अ स्टोरी which was actually an informative story. She was telling about मेंढक और tadpoles के बारे में बातचीत हो रही थी। तो आप देखिए तो कितने वो बच्चे इन्वॉल्व हैं, और वो एक पपेट यूज करके सुना रही हैं। मुझे याद है नेहा को हमने इनवाइट किया था हमारे कॉलेज में, और ये अंडरग्रेड स्टूडेंट से बात करने के लिए, और मैं ये मानती हूँ कि उसके बाद नेहा की किताबों में मेरे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट इतना बढ़ गया, they felt happy that they knew an author। वरना ऐसे ही रहता है कि भाई ऑथर्स तो शायद वो लोग होते हैं जो मर चुके होते हैं, ठीक है, और या सिर्फ वही लोग होते हैं जिनका बस नाम किताब पर होता है पर शायद वो एग्जिस्ट नहीं करते। तो बच्चों को लगता नहीं है कि ऑथर्स भी रियल लोग होते हैं, ओके, जो अपनी किताब के बारे में और अपनी जर्नी के बारे में बात कर सकते हैं। तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर माय स्टूडेंट्स, एंड दीज आर अंडरग्रेड स्टूडेंट्स, टू मीट नेहा। और उसके बाद उन्होंने इतनी सारी नेहा की किताबें और नेहा की पोएम्स अपनी क्लासरूम में शेयर की। तो ऑथर्स से मिल पाना, इलस्ट्रेटर्स से मिल पाना, तो ये बुक टॉक, एक किताब जो आपको पसंद आई उसके बारे में बात कर पाना, तो ये तो मेरे ही स्टूडेंट्स हैं एक्चुअली। तो ये जो हमारा चिल्ड्रंस लिटरेचर कलेक्शन है उसको बैठ के आप, सो द स्माइल्स, द इंटरैक्शन,
the library as a space where you can laugh, you can enjoy books, you can talk about the books that you have enjoyed, you can recommend a book. तो ये जो लाइब्रेरी स्पेस है इसको हमें इस तरह से रीइमेजिन करना पड़ेगा कि वो किस तरह से एक वार्म और वेलकमिंग स्पेस हो सकती है कि आप इस बारे में, और ये जो बुक टॉक है ये बहुत ज़रूरी है कि टीचर्स भी ये करें, उनको जो किताब पसंद आई उसके बारे में बता सकें, उसको दिखा सकें कि देखिए ये नई किताब है, मैंने पढ़ी है, बहुत ही मज़ेदार है, और एक आप उसके 2 सेंटेंसेस पढ़ के दे दीजिए तो उतना ही बहुत होता है। मगर इसके लिए like Vinita was also saying earlier, the teacher has to be a reader. Okay, तो अगर तो आप बोलेंगे अपने स्टूडेंट से, हम अपने स्टूडेंट्स को बोलेंगे पढ़ो, देखो लाइब्रेरी में कितनी किताबें हैं, जाओ जाके पढ़ो, तो उनको हमेशा ये लगेगा कि ये वो काम है स्टडीज से रिलेटेड जो हमें बताया जा रहा है, पर टीचर को ये इम्पोर्टेंट नहीं लगता अपने लिए। तो वो सक्सेसफुल तभी होगा जब उनको लगेगा कि हाँ भाई टीचर को भी मज़ा आ रहा है, वो किताब लेकर जा रही है घर, वो इशू करके किताब घर लेकर जा रही है, हमें भी देखो उन्होंने दिखाई कि ये किताब उन्होंने इशू की, उनको कितनी मज़ेदार लगी। तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। And like I said, I became a reader because my mother was a reader, and really because Mrs. Johnson was a reader. Okay, so I'm really grateful to Mrs. Johnson as well. तो ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक वो टीचर भी ये बुक टॉक और इस सब में पार्टिसिपेट ना करे। और फिर ये डिस्प्लेज, तो ये कुछ डिस्प्लेज हैं जो मेरे स्टूडेंट्स ने बनाए हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, कि अगर उनको कोई किताब पसंद आई, वो चाहते हैं कि तो एक तरह से इट्स एन एडवर्टाइजमेंट फॉर अ बुक। तो किताबों को भी तो आप देखिए तो पब्लिशर्स कैसे एडवर्टाइज करते हैं किताबों को। हैरी पॉटर की जब भी नई बुक आती थी, पूरा द होल वर्ल्ड यूज्ड टू बी फ्लडेड विद मर्चेंडाइज अराउंड हैरी पॉटर, यू कुडंट मिस इट। ओके, तो हम क्यों नहीं सोच सकते कि हम अपनी किताबें जो हमारे कलेक्शन में हैं वो एडवर्टाइज करें, वो बच्चों तक पहुँचे। और ये क्लासरूम लाइब्रेरी के लिए भी उतना ही अप्लाई करता है जितना स्कूल की लाइब्रेरी के लिए। तो ये अब कैसे वो करेंगे ना कि आपने कोई कहानी की एक ओपनिंग बता दी, थोड़ा उसको आर्टिस्टिक तरह से प्रेजेंट कर दिया, या किताबों के ही डस्ट कवर्स। मैं एक स्कूल में गई, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, जहाँ पे क्लास 5 के बच्चे टिंटिन पढ़ के उन्होंने अपने कवर्स बनाए टिंटिन के। सो टिंटिन एट कुतुब मीनार। ओके, तो आप कैसे इमेजिन करोगे टिंटिन को कुतुब मीनार पे। ओके, सो दे हैड मेड ऑल काइंड्स ऑफ इंटरेस्टिंग कवर्स अराउंड टिंटिन। ओके, आई कीप द टाइम इन माइंड। यस, नेक्स्ट। Okay, so this is another kind of interesting display where if you do not have too much space, how do you use strings to display books? How do you make the display more attractive so that children feel कि भैया ये हमें कुछ इसमें से उठा के पढ़ना है। ये एक्चुअली मैं बुक शॉप में गई, तो आप देखिए, मतलब इट्स नॉट अ लाइब्रेरी, but look at that interesting huge moth जो कि आपको अट्रैक्ट करता है। I'm not saying that we spend so much money, मगर वो उसके बिना भी वो बहुत अट्रैक्टिव डिस्प्लेज और इनवाइटिंग डिस्प्लेज बन सकते हैं, जो बच्चों को इनवाइट करें। ओके, these are 2 photographs that I took at Bukaru. So Bukaru is a festival which happens in Delhi. It's organized by a bookshop. It's all around books. तो ये एक स्पेनिश इलस्ट्रेटर थे जिन्होंने कुछ कीड़ों मकोड़ों के बारे में, दुनिया भर के कीड़े मकोड़ों के बारे में किताब बनाई थी। तो उन्होंने ये इतनी लंबी एक डूडल वॉल बनवाई बच्चों से कि आप बड़े से बड़ा कीड़ा बनाओ,
कैसा कीड़ा सोच सकते हो आप जो कि डरावना हो। तो वो कलर्स वगैरह लेकर तो वो पूरी वॉल अजीब अजीब कीड़ों और अजीब अजीब क्रीचर्स की बनी हुई है। मुझे लगता है कि हमारे स्कूल्स में आर्ट, लाइब्रेरी, ये सब कुछ अलग अलग डायरेक्शंस में, अलग अलग साइलोज में काम करते हैं। दे नेवर एवर कम टुगेदर टू क्रिएट एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस फॉर चिल्ड्रन। सो द नेक्स्ट वन, तो ये आप देखिए तो लुक एट दैट चाइल्ड। तो ये एक और आर्टिस्ट थे, he was a Portuguese illustrator। तो उन्होंने ये बच्चों से काम करवाया कि आप कुछ भी बनाओ एब्स्ट्रैक्ट, वो क्लियरली रिकग्नाइजेबल नहीं होना चाहिए। ओके, तो हमारे यहाँ भी हमें लगता है हमारी क्लासेस में एब्स्ट्रैक्शन को लेकर हम नहीं वो ज़्यादा सोचते हैं। तो आप देखिए तो कुछ ही गुचुड़ मुचुड़ सा बच्चों ने बना रखा है, पर वो पेंट वेंट लेके लगे हुए थे। और ये कुछ वो बच्चे हैं जो छोड़ के ही नहीं जाना चाहते थे। तो इतना लंबा लंबा, एंड दैट गर्ल विद हर मेसी हैंड्स, उसने मुझे देखा कि मैं फोटो खींच लूँ तो उसने यूं हाथ करके अपने दिखाया कि देखिए आई एम द आर्टिस्ट, आई एम एन आर्टिस्ट। Okay, so this feeling about being a writer, being an artist, we don't give that to students. Yeah, so next. तो ये एक और ये इस बुक फेयर की है, 3-4 दिन पहले की ये तस्वीर मैंने खींची थी। तो यहाँ पर एक इटालियन इलस्ट्रेटर थे, तो उन्होंने पहले अपनी इलस्ट्रेशंस की थोड़ी बात की, फिर उन्होंने बच्चों से बोला कि तुम मेरी पोर्ट्रेट बनाओ, अपनी भी पोर्ट्रेट बनाओ। ओके, तो कुछ बच्चों ने तो दोनों की बनाई, पर ये लड़की लगी हुई थी, इसने केवल उनकी बनाई। ओके, तो द होल आइडिया, और वो बड़ी सीरियसली ही गेव चिल्ड्रन दैट रिस्पेक्ट कि आप अगर बना रहे हो तो आई रिस्पेक्ट योर वर्क। वो बड़ी शांति से बैठे रहे, बच्चे आके उनको यूं करके देख रहे हैं। कोई 1-2 मम्मी पापा का फोन लाके फोटो खींच के उनकी फोटो ले गए कि अब हम उनकी पोर्ट्रेट बनाएंगे, मगर बहुत ही शिद्दत के साथ बैठ के जो काम दिया गया बच्चों ने उनकी पोर्ट्रेट बनाई। एंड दैट एक्सपीरियंस ऑफ क्रिएटिंग आर्ट, ऑफ थिंकिंग, तो ये मुझे लगता है कि हमारे उसमें सब अलग अलग क्लासरूम्स में रहता है। या so this is I don't think we need to really see this after looking at Gayatri's library कि एक लाइब्रेरी स्पेस कैसे इनवाइटिंग हो सकती है। तो वो शेल्व्स, वो मूढ़े, मुझे लगता है कि स्कूल लाइब्रेरीज थोड़ी वो टेबल, चेयर और आयरन वो उसमें ही थोड़ी फंसी रहती हैं। नेक्स्ट, हाँ, ये द होल आइडिया ऑफ कॉस्प्ले, कॉस्ट्यूम प्ले, कि आप किसी कैरेक्टर की तरह ड्रेस होकर आइए। तो ये बच्चों को भी बहुत फैसिनेट करता है। एडल्ट्स, this is from Comic Con actually. Both these photographs are from Comic Con. So the buzz around Comic Con कि comic, and it's not just about characters in comics, मगर all kinds of characters, उसकी तरह adults भी ड्रेसअप होके आते हैं, बच्चे भी ड्रेसअप होके आते हैं। और वो जो थ्रिल है कि आपको जो कैरेक्टर किताब में से पसंद है, आप उसकी तरह ड्रेसअप होके गए। अब आप लास्ट वाली 2 पर जाएंगे। तो ये मेरी एक फ्रेंड है, उसने रिसेंटली शी शिफ्टेड टू आयरलैंड। तो वहाँ पे वो मजेदार बात बता रही थी कि उसकी बेटी वो जहाँ स्कूल में गई, वहाँ पर वो बच्चों से वो पूरा एक वीक सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ पर वो बच्चों से कहते हैं कि आप अपने फेवरेट कैरेक्टर की तरह बन के आइए। So this is the character that the girl selected, and this is what she dressed up as. Okay, so she sent me this photograph of her daughter dressed up as this कैरेक्टर, और फिर बच्चों को आके ऐसे ड्रेसअप होके फिर अपनी कैरेक्टर जो किताब में से लिया, उस किताब के बारे में बात करना, अपने कैरेक्टर के बारे में बात करना, उनको क्यों ये पसंद आया। तो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो कॉस्ट्यूम प्ले हमारे यहाँ हम करते हैं, हम सिर्फ छोटे बच्चों के लिए करते हैं ये,
कि आप जब हम छोटे थे तो वो होता था ना, क्या कहते थे उसको, यस फैंसी ड्रेस, यस फैंसी, और वो भी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा पेट्रियाटिक हो जाता था। आप रानी लक्ष्मीबाई बनकर जाइए, ओके। तो सो बट दिस होल आइडिया ऑफ कॉस्ट्यूम प्ले, जहाँ पर आप अपनी इमेजिनेशन यूज करिए, सोचिए कि आपका किताब में से कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है, या तो आप वापस जाइए। तो a little bit now about the library as a concept. तो स्पेस की भी बात, पर कॉन्सेप्ट किस तरह से लाइब्रेरी स्कूल के कोने में ना हो जहां बच्चों को जाना पड़े, बट कैन द लाइब्रेरी कम इनटू द क्लासरूम। तो एक एस्पेक्ट गायत्री बात कर चुकी है क्लासरूम लाइब्रेरीज की, मगर इसके और भी पहलू हैं। हाँ, तो classroom library, it can be as small, as simple as this, which is a picture from a government school classroom, जहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स ने वो कोशिश करते हैं कि वो एक छोटी सी क्लासरूम लाइब्रेरी बना पाए। पर मेरा एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस क्लासरूम लाइब्रेरीज को लेके ये रहा कि अगर हम क्लासरूम लाइब्रेरी ऐसे क्रिएट करते हैं ना कि आप बच्चों से बोलिए वो घर से एक किताब ले आए, तो वो एक्सपीरियंस मेरे साथ सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि ये क्लासरूम लाइब्रेरी बनेगी, ये किताबें और बच्चों के पास जाएंगी, ये किताबें फटेंगी, तो मैं वो किताब लेके जाता हूँ या जाती हूँ जो कि मुझे पसंद नहीं है। अगर ये खो जाए और ये वापस ना आए, ये फट जाए, ओके, तो मुझे दुख नहीं होगा। ओके, दिस वाज माय एक्सपीरियंस, सो आई रियलाइज दैट आई विल हैव टू रीथिंक द आइडिया ऑफ अ क्लासरूम लाइब्रेरी, क्योंकि बच्चे यही करते थे, वो अपनी जो किताबें उनको अच्छी नहीं लगती थी ना, वो ले आते थे क्लासरूम लाइब्रेरी, एंड देन वो सर्कुलेट होके भी वो उसमें मजा नहीं आता था बाकी बच्चों को। तो हाँ, सो ये दिस इज अ स्मॉल क्लासरूम लाइब्रेरी वंस अगेन व्हिच माय स्टूडेंट क्रिएटेड इन अ स्कूल। एक और काम जो मैं इंसिस्ट करती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स करें, कि अगर आप क्लास में कोई थीम चल रहा है आपका, तो आप अपनी क्लासरूम को बदलिए। तो ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप लाइब्रेरी में जाएं, उस थीम से रिलेटेड आपको जो किताबें लाइब्रेरी में मिले, आप उनको निकाल के अपनी क्लासरूम में ले आइए। तो एक हफ्ते तक अगर आपका वो थीम चल रहा है, जैसे ये 5वीं क्लास की रिमझिम एनसीईआरटी में एक कविता है बाघ आया, तो नागार्जुन की कविता है, तो उसके ऊपर वो पूरा मतलब बाघ को लेकर, तो हाउ कैन यू कनेक्ट न्यूज़पेपर्स, लाइब्रेरी बुक्स एंड द टेक्स्ट बुक इनटू गेटिंग चिल्ड्रन टू रीड। तो बाघ को लेकर फिर उसने पूरा अपना क्लासरूम बदला, तो जो कुछ मिला बाघ के ऊपर लाइब्रेरी में से वो निकाला, आपको अखबारों में क्या मिला वो निकाला, उसको पेस्ट किया पब्लिक, तो उसके बाद ये बच्चों ने भी कुछ कुछ बनाया, फिर उन्होंने ये किताब बनाई, वो बहुत क्लियरली नहीं दिख रही, सॉरी, तो किताब का टाइटल है बाघ दिन भर क्या क्या करता होगा। तो 5वीं क्लास के बच्चों ने लिखने की कोशिश की कि एक दिन में बाघ क्या क्या करता होगा। तो हाँ, अच्छा, एक ये गायत्री भी कह रही थी कि क्या हम ये संभव कर पाएं कि सिर्फ लाइब्रेरी पीरियड नहीं, मगर लाइब्रेरी का एक्सेस आपको स्कूल के बाद रिसेस में फ्री पीरियड हो, तभी भी आप जाके कुछ ढूंढ सकें। मगर बहुत बार ये होता है कि हम ये मानते हैं कि लाइब्रेरी पीरियड तो उसी में जाके बच्चे उसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर गायत्री has also spoken about this, तो रीडिंग अलाउड फ्रॉम बुक्स इन द लाइब्रेरी। और इसमें मैं एक रूल अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि एक तो आप किताब की अच्छे से तैयारी करके जाएंगे। आप कोई भी किताब उठा के आप सोचे कि बच्चे हैं, कोई भी किताब मैं उठा के तभी पढ़ दूंगी, तो इट डज नॉट वर्क। वो एक्सप्रेशंस नहीं आएंगे, वो आपकी आवाज़ में पैशन नहीं आएगी अगर आपने उस किताब की तैयारी नहीं की। दूसरी बात ये कि किताब वो हो जो आपको पसंद आए। जैसे नेहा सुबह कह रही थी कि आप वो लिखिए जो आपको लगे कि ये लिखने के लिए मुझे रात को नींद नहीं आ रही है।
तो किताब पढ़ते समय भी वो किताब हो जो आपको लगे कि ये कहानी ने ना मेरे पेट में दर्द कर दिया। अब जब तक मैं इसको पढ़ के नहीं सुनाऊंगी तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। तो जो जिस किताब ने आपकी इमेजिनेशन को फायर किया, ये ना सोचें कि अच्छा चलो बच्चों के लिए ठीक है, इसमें चीकू खरगोश है, इसमें भूरा भालू है, तो पढ़ देते हैं, तो बच्चों के लिए है, सिंपल किताब है तो ठीक है। मगर अगर वो आपको नहीं पसंद आई तो आपके पढ़ने में वो इंटरेस्ट, वो एंजॉयमेंट, वो प्लेजर, वो पैशन नहीं होगा। तो आई जस्ट वांटेड टू एंड विद दिस कि जनरली हम रीडिंग को इस तरह से ट्रीट करते हैं कि वो कह रही है उससे, सॉरी मैं सामने तो नहीं आ रही, ओके, तो वो कह रही है कि व्हाई आर यू जस्ट सिटिंग हियर, दिस इज अ बुक, यू नो व्हाट अ बुक इज, डोंट यू? नथिंग मॉम, आई एम जस्ट एनकरेजिंग हिम टू रीड। तो बहुत बार हम रीडिंग को ऐसे ही एनकरेज करते हैं, पढ़ो, ये रही लाइब्रेरी, इशू करो, ओके, तो वो मुझे लगता है तब तक नहीं होगा जब तक हमारा खुद का वो इंटरेस्ट और वो इंजॉयमेंट और प्लेजर नहीं होगा। सो थैंक यू वेरी मच। Thank you for your inputs, ma'am. They will really be helpful for us. कोणाकूय खंयचोय प्रश्न बीन आसत जाल्यार तांच्यांनी विचारचो. Hello ma'am, I'm Vedika Joshi and Gayatri ma'am spoke about the classroom library. So I would like to tell that we already have this in our school and we don't have to shell out a separate time. Children have access to this classroom library anytime. The moment they come to school, from that time to the time they leave, and even in the middle, if they finish their work, like some children finish their work earlier and some children take little time to finish whatever given classwork. So those who finish, they have some time, extra time with them. So they can just take a book and spend that 5 minutes or 10 minutes, whatever they get extra. And we have it in our primary section and we do the shifting of the box of that books. And we have books which we have issued from the school library, plus the children also have added their books to the library. Thank you. केवल मैं कहना चाहती थी, इसमें क्या होता है ना, बहुत बार जो बच्चे जल्दी काम खत्म कर लेते हैं ना, उनकी एडवांटेज रहती है इसमें। तो इनफैक्ट जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं उनको फिर क्लासरूम लाइब्रेरी का एक्सेस बहुत कम मिलता है, जबकि उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो सिर्फ मैं ये कहना चाहती थी। My name is Gaurish Naik. It is very enlightening session actually. So I want to know about the changing perspective in libraries, in the sense now you have been speaking about the innovative strategies which one can adapt in the library and form the library. So I want to know what is the significance of expression. Basically the books is more about expression. So significance of how we can make the student realize the significance of expressions in the library system. And second question regarding is we have this now the library technology is changing, so we have the e-libraries, then other form of mediums like visual. So how those things can inculcate in the library system? That is the question. Thank you. So were you speaking about expression, like how do kids express what? I didn't get your first question. I'm sorry. Okay. So yes, so when a child reads a book, there are many things happening in there. First is, of course, he or she is decoding the words, and there is comprehension that is happening. Some thinking is happening. So that thinking, reflection part, once the book is finished, the reflection part that ties the story with the child's past experiences or imagination is quite important to happen. For that to happen, we also need to have one-on-one dialogue with the child.
So expression can happen that way also, one-on-one dialogue, or we can encourage children to maintain a small diary or a library card where they can write their thoughts about the book. It doesn't have to be like an elaborate essay. It could be just 1 or 2 lines. It could be a picture. It could be anything really. So yeah, that can happen. And the other question was about the changing technology. E-libraries. So honestly speaking, I don't have any experience with e-libraries, but I don't think for this age, especially pre-primary and even younger kids, there is no other choice than the actual books. So e-library would not work well for that age group, is what I think. तो ई लाइब्रेरीज को लेके एक्चुअली इंटरेस्टिंग रिसर्च है. एक तो लाइक गायत्री सेड दैट इट डजंट रियली वर्क फॉर यंगर चिल्ड्रन, क्योंकि पिक्चर बुक्स वगैरह वो तो एक फिजिकल किताब के साथ ही आप उसका मैजिक फील कर सकते हैं. दूसरी बात ये है कि अगर आप दुनिया में किंडल वगैरह को लेके रिसर्च देखें, एक्चुअली किंडल हैज फेल्ड. ओके, सो इवन फॉर एडल्ट्स and especially in the context of reading fiction, a Kindle has not done well. Okay, it came with a huge bang और मुझे लगता है लोगों ने बड़े शौक से Kindle वगैरह खरीदे, मगर मेरी तो खुद ही 1-2 फ्रेंड्स हैं जिन्होंने खरीदे, अब उनका Kindle बंद पड़ा रहता है. तो एक्चुअली और आप देखें तो हमारी सरकार एक्चुअली बहुत ई बुक्स और ई लाइब्रेरीज को पुश कर रही है. But I don't know, I have my reservations about that. And I feel actually that it is done in the name of reaching more people. But physical books are really back. And it is the smell, the feel of a book which excites people and makes them into readers. So I don't know, I have my reservations about e-libraries. Our main concern is, of course, the screen time these days. So e-libraries is like a bit counterintuitive if you are, working towards that cause. So I would stay away from e-libraries at least till, in the school years. This is for Gayatri. In your presentation, mainly the references were with English books. There are many teachers from vernacular languages, mainly Marathi or Konkani medium teachers also. So, could you give kindly a list of books in Marathi which could be helpful for the... Definitely, I was going to include that in my talk as well. I'm sorry. So, in the library, it's in Pune. So, my main struggle in the library is to, encourage kids to borrow regional language books. So I'll be very honest, it is a struggle and we are still struggling. Unfortunately, kids prefer one language over the other in the area that at least I come from, which definitely needs to change, and we are taking efforts, like systematic efforts in the library to try to change that situation. We have a decent collection of Hindi and Marathi books. From Anvesha, I'm going to get hold of her and get Konkani books as well. But I'll be very happy to provide you a list of recommended or curated list of books for your teachers. And also, if you need any help or anything at all, if you want to do something in your classrooms, in your schools, if you need some resources or if you just want to chat, please feel free to connect. Anvesha has our contacts. देव बरें करून आमच्या मार्गदर्शिकांक तशेंच आमच्या प्रेक्षकांक इतल्या शांततायेन तुमी हें सत्र आयकून घेतलें. इतल्यान आमचें हें दुसरें सत्र सोंपता म्हूण हांव जाहीर करतां.